जय माताजी मित्रों, आज अमे शंकर भगवान मंदिर जઈએ છીએ। તમને મંદિર સારું લાગે તો વિડીયો લાઈક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ ને ક્લિક કરજો। तो जय माताजी मित्रों, हवे अमे पहुंची गया छे फाइनली मंदिर में। तो हवे अमे तमने बधा फूल बतावीशुं, तो तमे जोई शको छो आ करण छे अने अमे आगळ जईने बीजा बधा फूल बतावीशुं। तो हवे आ बाजार हेड तो जाय छे अने हूँ तो साइकल लईने जाऊं छुं अने मारी आखी एंट्री ज अलग छे। जय बाजार। हाय गाइस, जय माताजी मित्रों, आज અમે તમે અમારું મહાદેવનું મંદિર બતાવ્યું। તમને મંદિર સારું લાગે તો વિડીયો લાઈક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલને ક્લિક કરજો। અમે તમારે ફૂલ બતાવો। તમે દેખી રહ્યા છો કે મહાદેવના મંદિરમાં કેવો છે ફૂલ આવ્યા હી અને એકન ચામુંડા માતાજીનું મંદિર છે। તો અમે ચામુંડા માતાજીના દર્શન કરાવજો, મહાદેવના દર્શન કરાવજો। આ મંદિર આવી ગઈ છે, તમે દેખી છો આ મંદિર આવ્યું છે। હવે આપણે મહાદેવના દર્શન કરજો। તો ચાલો, અમારા ભાઈ અજીત આવે છે, તમે બતાવું હું। આ દેખો અજીતની એન્ટ્રી અલગ है, देखो હવે અજીત આવી ગયો છે। હવે અમે બે જણા આવે મંદિર। હવે અમે કારે ખાઈએ, चलो भैया चलिए। अब सीधे जाओ माताजी महादेव मंदिर अंदर जी से ये साइकिल मिली सु हम ये साइकिल मिली हो भैया भैया शंकर भगवान मंदिर है। तो चलो हमें हम बता दे आपको हमारा मंदिर। कोई बात नहीं, હવે આપણે આવી ગયા છે મહાદેવના મંદિરે। આજે અમે મહાદેવનું મંદિર તો તમે જોઈ શકો છો, આ છે મહાદેવનું મંદિર। જોઈ શકો છો हाय गाइस, तो पहुंच गए हम महादेवના મંદિરે। તો તમે જોઈ શકો છો, આજે ગણેશ ચતુર્થી છે અને આપણા ગણપતિ બાપા છે, તો તેમને દર્શન કરી લો। અને હનુમાન દાદા છે। તો આટલે માતાજી મંદિરે આવે છે એટલે અમે દર્શન કરશો અને અહીંયા પણ દર્શન કરીશું। આટલે બી આવે છે, આટલે भी चलो मुझे कोई नहीं बोले आटले भी चामुंडा के जा बोल। हाँ फाइनल पे चामुंडा माताजी मंदिर आ जाए छो। तो फाइनली હવે પહોંચી ગયા છે ચામુંડા મંદિરે। તો તમે જોઈ શકો છો, આ શ્રી ગણેશ ભગવાન છે આપણા। આ જોઈ શકો છો માતાજી, અને આ છે ચામુંડાનું મંદિર, જોઈ શકો છો। તો અમે નીકળવાની છે, હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ। હવે આપણે બીજું મંદિર બધા બીજું એક અલગ છે। તો હવે ભવાઈ થતી હોય અમારી કન મહાદેવ। તો હવે આપણે અહીંયા હવન થાય છે, ત્યાં આપણે હવન કુંડી બતાવીશું તમને। तो चलो हम हमारी मुझे बता दें। ये देखो, ये हमारी हवन कुंडी है हमारी महादेव की। बढ़ना तो खावा हमें पहुंची गए हवन कुंडी कर। तो તમે જોઈ શકો છો, તો અહીંયા પમદાર હવન થયા છે। તો તમે જોઈ શકો છો હવન કુંડી, અહીંયા પમદાર હવન થયા છે। તો હવે અમે જવાના છીએ, ક્યાં જઈએ? હવે ફૂલ બતાજો, ચબૂતરું બતાજો, ફૂલ બતાવીશું, ચબૂતરું બતાવીશું અને આ બતાવીશું, વોચ બતાવીશું। तो चलो हम अपने वॉच ने वो सब बता दो। रास्ते का हम हमारे चप्पल पहन के आते हैं, तब तक यहाँ काटना थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए पैर में लगेंगे। और आप देखो महादेव का और चामुंडा माता के मंदिर कैसा है बाहर से। ऊपर जो बताओ, और वो ध्वजा आपको दिख रही है,
वो रजा है। તો તમે જોઈ શકો છો આ વોચ છે અને વોચ કોને બનાવ્યો છે તમે વાંચી શકો છો। આ પડિયા વિરાજી પુનાજી તરફથી પાણીનું પરબ શ્રી આપેશ્વર મહાદેવ ટેડર્સ કરેલ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ વોચ છે, આ પાણીની ચકલી છે, તો પાણીની ચકલી ચાલુ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ પાણી આવે છે, પાણી અને આ છે વડનું ઝાડ। તો બાદર આપણે કહે છે કે આપણે વડનું ઝાડ બતાવીએ, તો ચલો। તમે જોઈ શકો છો આ હેચકો છે, તો બાદર કે છે આપણે હેચકો ખાવાનું મન થાય છે, તો મેં કીધું ચાલો આપણે હેચકો ખાઈએ। તો પહેલા હું હેચકો ખાઉં છું ને બાદર તું ફોન પકડ લે ચાલ। तो ये हमारे मित्रों आ देखो हमारे भाई है ना હવે હેચકો ખાય અજીત ये हो रहा है बेजी ना करे हो रहा है बेजी थी આ બધી વેલો મજબૂત છે ગાઈસ। તો તમે જોઈ શકો છો, તો તમારે પણ હેચકો આવી જાવ, હેચકો ખાવાની મજા લેવી હોય તો આવી જાવ ચાર રસ્તામાં શ્રી આપેશ્વર મહાદેવના મંદિરે। તમારે દર્શન કરવા છે અને હેચકો ખાવાની મજા પણ કેવી છે તમે જોઈ શકો છો। અને એટલે અમારા આજુબાજુ ફૂલ બતાવો અમે આ જગ્યા બહુ સારી છે, તમને દર્શન કરવા આવવું હોય રજા વખતે ત્યારે તમે એક આવવાનું। અને તમે જોઈ શકો છો આ એટલે હું હવે હેચકો ખાઈ શકું છું। હવે તો ખાશે ને हाय गाइस अब मैं झूला खाता हूँ, देखो आपको तो बादल तो रीत ज अलग से હેચકો ખાવાની તમે જોઈ શકો છો। और गाइस आपको भी इधर झूला खाना आना आपको बच्चों को लेके तो महादेव के मंदिर आना चार रास्ता चौकड़ी। तो अब हम तुमको बताने वो चबूतरा। और मित्रों ये जो आपको घर दिख रहा है और सदियों पुराना हमारा घर है। हाँ ये देखो गिर गया सारा घर। फिर यहाँ पर बाप जी रहते थे और ये घर तो अब कुछ भी नहीं है, पुराना है, ये पुराने साल और ये तो खूब पुराना है। हम आपको अंदर दिखा दे कि हमारे घर कैसा हो गया है, सदियों पुराना घर आपको दिख रहा है बाहर दिख रहा हो तो हम अंदर तो नहीं जाएंगे, बिना हाथ कुछ होगा तो कर डालना। और ये देखो हमारे चबूतरे का मंदिर, चबूतरा देख सकते हो। तो अब हमने बात करी थी फूल बताने की, तो अब हम फूल बता रहे हैं, आप देख सकते हो ये पीले फूल है। और आपको हम जामुन का झाड़ बताएंगे, ये आपको दिख रहा है जामुन के झाड़ को नहीं हुआ है, अरे जामुन का झाड़। और अब हम बताएंगे सीताफल का झाड़। तो चलो चलो हम आपको सीताफल का झाड़ बताएंगे। हमने देखा होगा तो जिसने देखा नहीं हमारे वीडियो में देखना। ये रहा सीताफल का झाड़, ये देखो अभी इधर आया हो सीताफल का झाड़, ये देखो देख सकते हैं सीताफल आया है और ये भी आया है दूसरा, ये देखो खाने का मन हो रहा है क्या। તો પીળા ફૂલ છે એને કરણ કહેવાય છે, તમે જોઈ શકો છો આ ફૂલ। તો ફૂલ કેવું મસ્ત મજાનું છે તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે એમને જાંબુડો બતાવીએ। તો બાદર અહીંયા हम आपको जामुन दिखाएंगे। आप यहाँ जामुन बहुत बड़े बड़े आते हैं, ये देखो हमारे मंदिर के जामुन देख सकते हो। और ये भी जामुन का झाड़ है, आप देख सकते हो। यहाँ जामुन अभी उगे नहीं है। ये चंपा चमेली, ये चंपा चमेली, ये देख सकते हो आप चंपा चमेली के फूल। हम तुमको फूल बताएंगे। बादल तुम ये देखो बादल में पहुंच तो नहीं पा रहा, ऊपर कोशिश करो। रुको अभी मैं ऊपर चढ़ता हूँ। फॉलो करो तो मैं यहाँ पर से जल्दी फूल तोड़ कर ला दूँ। तो फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तो मैं यहाँ पर से जल्दी ला दूँ। तो हम लाएंगे, तुम सब्सक्राइब करो इतनी देर पे।
डाली थोड़ी ऊंची सी, हम पहुंच नहीं पा रहे तब तक तो ये तब तक हम आप कर दिए कुछ सब्सक्राइब जुगाड़। कर दो, ये हम जुगाड़ कर दिए, आपको हमारे फूल बताएंगे। चंपा चमेली, चंपा चमेली का आप देख सकते हो, ये चंपा चमेली का फूल है, देख सकते हो। देखिए वो मिट्टी से है। हमको ये झाड़ का नाम पता नहीं है। ये झाड़ बहुत बड़ा होता है, तो आपको हम बताएंगे। और ये शैतुली है, ये हमारी सेतुड़ी है हमारे मंदिर की। और इसके इतने इतने शैतुल आते हैं, वो लीला कलर के ईयर जैसे। और ये है जाम्बू का झाड़। ये रहे वो लाल फूल आते हैं, वो उसका झाड़ है। का झाड़ है ये। और ये है हमारी बादाम, बदम। और यह है हमारा लिमड़ा, और यह है हमारा वड का झाड़ है, वहाँ पर हम जुड़ सकते हैं। अब देख सकते और हैं। यह है हमारा वबा। अच्छा चंपल कागल ले आसो, आज चंपल पकड़ मुआम कागल को। हाँ को और गाइस इधर कुछ लिखा, मेरे को थोड़ा वांचना नहीं आता, आपको वांचना तो आप वांच सकते हैं। और गाइस आपको जगह अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल को क्लिक करना। बाकी है, हाँ हम फूल बचाएंगे। अभी तो शुरुआत है गाइस, अभी तो शुरुआत है गाइस। अभी तो पिक्चर बाकी है। ये तो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो चलो, ये है आशा पाला, आप देख सकते हो, ये आशा पाला है। बादल तू ऊंचा कर इसको, पहुंचू रुक तू दूर है, मैं दूर से देखता हूँ। वो सामने दिख रहा है, वो इतना ही बड़ा है। और सामने दिख रहा है, वो इतना ही है। और ये भी आशा पाला है, ये भी ऐसा बड़ा है। और ये रही बदाम का झाड़। ये किसको क्या बोलते हैं इसको? और ये है हमारी बहुत सारी आप देख सकते हो, ये सब झाड़ है प्यारे प्यारे। और ये है खजूर, તમે જોઈ શકો છો, આ છે ખજૂર। આ બાદર તો જુઓ કેવો બચી બચીને આવી રહ્યો છે। वो यार खजूर के वो होने वाले पत्ती ज्यादा है, इसलिए बच के रहना इधर से। તો તમે જોઈ શકો છો, આ પણ ખજૂર છે। અને આ પણ આપણે બતાવ્યું હતું, આ પીળું ફૂલને શું કહેવાય? આને કહેવાય કરેણ। અને આ પણ ખજૂર છે, અને પેલા સુધી પણ ખજૂર ખજૂર જ છે, અને આને શું કહેવાય? કરેણ। અને આ છે ચંપા ચમેલી, તમે જોઈ શકો છો ચંપા ચમેલીનું ફૂલ। બાદર એક ફૂલ, બાદર એક ફૂલ તમે જોઈ શકો છો। અને આ છે બિલ્લીપત્રીનું ઝાડ, અને બિલ્લી કહેવાય તો આ શંકર ભગવાનને ચડે છે, આપણા ભગવાનને। અને આસોપાલો તમે જોઈ શકો છો। અને આમાં કાં તો આપણે ભૂલી ગયા। અને આ છે અરડુસી, આને બાદર અને અરડુસી કહેવાય। આ પણ અરડુસી। અને આ છે લીમડો, લીમડો છે। આ છે ગોચાલી, આ છે કરેણ। अब हम मंदिर के पीछे वाले भाग में जाएंगे। अभी हमने आगे वाला भाग बताया है। अब हम मंदिर के पीछे वाले भाग में देखेंगे क्या क्या होता है पीछे पीछे। मंदिर